Okay, so we saw the definition of the word offense, definition under CRPC and under IPC. From that, we came to know that there are 4 essential ingredients of an offense. So in order to constitute an offense, there should be 4 elements. First is act done by a human being, mens rea, actus rea, and injury to other person. Then we divide offense into 2 parts, on the basis of bail and on the basis of warrant. On the basis of bail, it's divided into 2 parts, bailable and non-bailable offenses, where you also have to understand about concept of anticipatory bail. Okay, read the points by the end of the day today. Explanation part is already over. So अभी आज क्या start करना है अभी? Offenses on the basis of requirement of warrant. Okay, so on the basis of warrant, offense can be divided into 2 types, cognizable and non-cognizable. Okay, so let's see what is meant by the word cognizable. Cognizable offenses, or they are non-cognizable. So what do you mean by cognizable offenses? In such offenses, person can be arrested by police without warrant. By police without warrant. Okay. So यहाँ पे आपको क्या हो सकती है? Arrest हो सकती है. That too without warrant. So after understanding this, if you come to this side, non-cognizable, non-cognizable is exact opposite. यहाँ पे we will say police cannot arrest. यहाँ पे arrest होती है, without a warrant arrest होती है, but यहाँ पे police cannot arrest without a warrant. That is, they need a warrant, only then they can arrest. So cognizable, what do you think? Basically, अभी warrant का मतलब क्या है मैं बताऊंगी. Warrant क्या है? I'm saying arrest without warrant. यहाँ पे police cannot arrest without a warrant. So warrant is like एक document है जिसमें लिखा है उस person का नाम, को arrest करना है. This is issued by the court, and court will state the type of offense this person has committed. Okay, so अगर वारंट पुलिस के पास है तो पुलिस उस वारंट को लेके जाएगी उस पर्सन के घर पे और उसको अरेस्ट करेगी. कुछ ऑफेंसेस इतने सीरियस होते हैं that you don't have to wait for a warrant. Okay, you don't have to wait for a warrant. आप पुलिस डायरेक्टली जहां पे भी वो पर्सन दिखेगा, ऑफेंडर दिखेगा, उसको अरेस्ट कर लो. Don't wait for a court's order. Don't wait for a court's warrant to come. Okay, so जैसे हमने सीरियसनेस के बेसिस पे बेलेबल नॉन बेलेबल को डिवाइड किया था कि जनरली जो ऑफेंसेस लेस सीरियस है, लेस सीरियस, वो बेलेबल होते हैं. वैसे व्हेन आई से कॉग्निजेबल, एंड कॉग्निजेबल का मीनिंग इज टू अरेस्ट विदाउट वारंट, दीज ऑफेंसेस वुड बी सीरियस और लेस सीरियस. व्हाट डू यू थिंक? Less serious. Less serious. No. Ma'am, can you repeat what you told? Okay, just ask please. Okay, my question was, just 1 minute. My question was, as we are saying, cognizable offense, right? Cognizable means arrest without warrant. So जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल रहेंगे वो लेस सीरियस रहेंगे या मोर सीरियस रहेंगे? So the answer More is serious, ma'am. More because they are not waiting for the court order. Correct. For the arrest. Yes, absolutely correct logic. So logic यहाँ पे है कि जो ऑफेंसेस बहुत सीरियस है, लाइक जैसे मर्डर केस है, गैंग रेप, waging a war against India, मर्डर, गैंग रेप, etc. इतने सीरियस ऑफेंसेस है
कि जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है वो ऑफेंडर आपको कहीं पे रोड पे दिख गया, उसको वहीं के वहीं उसको अरेस्ट कर लो. डोंट वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स, नो नीड. Police has that much authority power to go ahead and arrest the person without a warrant. वहां पे जो एग्जांपल लिया था वही यहाँ पे लेते हैं चेक डिसऑनर का. राइट, चेक डिसऑनर हमने कहा था कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया में और वो बेलेबल है. राइट, सो व्हेन आई सेड इट वाज बेलेबल, इट मींस इट वाज लेस सीरियस. सो एनी ऑफेंसेस व्हिच आर लेस सीरियस, बहुत सीरियस वाले ऑफेंसेस नहीं है, वहां पे पुलिस को हम डायरेक्ट अरेस्ट करने के लिए नहीं अलाउ कर सकते. पुलिस कैनॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट. दैट इज, जिस पर्सन ने डिसऑनर किया उसके घर पे पुलिस को क्या करना पड़ेगा, एक वारंट लेके जाना पड़ेगा. दे विल हैव टू टेक अ वारंट एंड देन गो टू दैट पर्सन्स हाउस कि देखो हमारे पास ये वारंट आया है, उस पर्सन को वारंट दिखाओ एंड देन यू अरेस्ट द पर्सन. Okay, so police will show this warrant to the person and then arrest. So after understanding this, okay, this is an example for this. Can we conclude that offenses जो है either bailable, non bailable, cognizable, non cognizable, ये चार parts में divide होते हैं. So generally the combination that you will find is going to be, क्या combination रहेगा इसमें से? If I say that an offense is bailable, तो बेलेबल के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आने वाला है बोलो मुझे, एंड नॉन बेलेबल के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन? Non cognizable. करेक्ट, यस. दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, जो बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है वो ऑफेंसेस लेस सीरियस होते हैं. जो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है वो ऑफेंसेस सीरियस नेचर के होते हैं. दे आर ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर. यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ये चीजें सीरियस नहीं है, बट थोड़ा लेस सीरियस है. ओके, so now come to this part. Cognizable offenses are offenses in which a person can be arrested by police without warrant. Cognizable are more serious. Intention is to avoid tampering. So what is the real intention? कि immediately उस person को arrest कर लेना, क्योंकि वो वैसे ही अगर freely society में घूमता रहेगा तो there are high chances that he will destroy the evidences. Okay, so जितना जल्दी हो सकता है ऐसे person को arrest कर लो so that we can avoid tampering of material evidence. Which offenses, जो भी बड़े बड़े offenses हैं like murder, robbery, theft, riots, counterfeiting currency, that is forged currencies को बनाना, fake notes को बनाना, definitely it's a very big offense. Non-cognizable, it means a person cannot be arrested by police without warrant. Warrant issue कौन करता है? Magistrate issue करता है. So these offenses are less serious. Example: simple hurt, assault, mischief, public nuisance. Various examples are there. Okay, the list does not end because there are many offenses which are defined under Indian Penal Code. इसमें से ये वाला तो आपको अच्छे से पता है. We have done this under torts also. So certain offenses you saw that you can put it under the two headings. You put it under IPC also and you can put it under torts also. And then you take a call whether you want to treat it as a tort or you want to treat it under IPC. Okay, so उस हिसाब से आपको जो remedy मिलती है वो change हो जाती है. Based on this, there's a question. Information is given to the in charge of police station against Mr. Sachin Tikore, a small trader, that he has committed a non-cognizable offense of fraud of underweights and measurements. The in charge of police station arrested without the order of magistrate, and therefore Mr. Sachin objects. Will he succeed? What will be your answer? Police cannot arrest this person because this is a non-cognizable offense, जहाँ पे पुलिस को right नहीं है to arrest the person without warrant issued by magistrate. Therefore, the objection raised by Mr. Sachin is correct and sustainable. Okay, so very simple. You just divide your offense, whether it is bailable, non-bailable, cognizable or non-cognizable. Yes, Dhruv.
Ma'am, the order for encounter or shoot on sight order is for cognizable. It comes under cognizable offenses. Like Yes, the offense would as be a you very said, serious you one. don't Yes. need a arrest warrant. Yes. Yes. So a person who is like 50 murders करके बाहर ऐसे ही घूम रहा है, तो अल्टीमेटली ऑर्डर देंगे कि जे जहां पे भी दिखेगा उसको पकड़ लो, और व्हेन यू ट्राई टू अरेस्ट हिम, डेफिनेटली वो क्या ऐसे ही खड़े नहीं रहने वाला है. ही इज गोइंग टू मेक वेरी सिंसियर अटेम्प्ट टू रन अवे. सो एट दैट टाइम व्हेन दे आर चेसिंग ईच अदर, गलती से पुलिस से अगर गोली भी लग जाती है तो दैट इज एक्सक्यूजेबल, दैट इज फाइन. एंड शूट वाला ऑर्डर भी हो सकता है, मे बी इफ ही इज अ वेरी Okay. हार्डकोर क्रिमिनल है तो ऑर्डर्स दे सकते हैं. Depends upon the type of offenses he has done previously. Okay, ma'am. Okay, so यहाँ पे आपका जो बेसिक पार्ट है ऑफ सीआरपीसी गेट्स ओवर. ओके, क्या था बेसिक की ऑफेंस क्या होता है और ऑफेंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं. तो ये 4 बहुत बेसिक टर्म्स इन सीआरपीसी, बेसिक एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. अब नेक्स्ट जो है दैट इज टेलिंग यू अबाउट द प्रोसेस, द स्टेजेस इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन अ क्रिमिनल केस. सो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था लास्ट बैच में, एंड आई हैव शेयर्ड इट विद यू yesterday. How many of you have seen that video? Stage 1, 2 and 3. Yes, ma'am, seen it. It was a something 2 minute and something seconds video. Okay, okay. So I think the rest of you haven't watched it. So एक बार quickly देखते हैं, and then maybe today again you can watch the video so that you'll have a more better clear understanding about this concept. So कोई भी क्रिमिनल केस को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट स्टेज को कहते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टेज, सेकेंड स्टेज इज इंक्वायरी, एंड थर्ड इज ट्रायल. ओके, आई ऐसे स्टेजेस में डिवाइडेड है. इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत कहाँ से होती है? एज इट इज अ क्रिमिनल स्टेज, आई टोल्ड यू यू विल हैव टू गो टू द पुलिस. वहां से शुरुआत होती है. आपके घर पे चोरी हुई, आप जाओगे पुलिस स्टेशन और पुलिस को पूरी कहानी बताओगे. ओके, फिर वो बोलेगा ठीक है, आपके पास कुछ एविडेंसेस है कि उसने कुछ टूल्स लाए थे, आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स है, आपके सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरास में कुछ फुटेज है वेयर यू कैन सी दैट हाउ दे एंटर्ड, फ्रॉम वेयर दे एंटर्ड. कुछ तो रहेगा आपके पास एविडेंस, तो वो लेके आ जाओ. Okay, so this is the first stage where you are interacting with the police. You are producing the evidences to the police, and then based on that, police क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाती है. उनको जो भी समझ में आया है उनकी इन्वेस्टिगेशन से, they'll make a report on it and they will give it to the court. ओके, फिर वहां पे पुलिस का रोल खत्म हो जाता है एंड फिर कोर्ट का रोल स्टार्ट होता है. सो सेकेंड स्टेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्वायरी, यहाँ पे एक्चुअल में कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कम्स इनटू पिक्चर. अब इंक्वायरी स्टेज में कोर्ट क्या करने वाली है? दे आर गोइंग टू फाइंड आउट whether an offense was really committed by the offender and whether he should go for the next stage, that is trial. मतलब ऐसे नहीं कि इन्होंने रिपोर्ट दिया है पुलिस ने तो उन्होंने 100% पुलिस की रिपोर्ट पे भरोसा रखा है, ट्रस्ट रखा है. नो, the court will also ask you for the evidences etc, and the court is going to satisfy itself on the grounds that yes, an offense is being committed by this person. Only when the court is satisfied, then you move on to the third stage, which is trial. Okay, trial. So this word as such has not been under the act, not been defined under the act. It simply means a legal proceeding. It is a legal proceeding to decide the guilt or the innocence. कि एक final, अभी यहाँ पे final decision होने वाला है. सारे evidences, सारे documents, witnesses, everyone, whatever you have with you to prove your side, you will present it. Okay, and then the end result of the trial is either acquittal or conviction. Conviction मतलब आपके ऊपर जो offense मतलब जो charges लगे थे, those are proved, charges are proved. So you are convicted, you are charged for that offense. Acquittal मतलब
ऑफेंडर इज रिलीज, कि आप उसके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए थे उसको प्रूव नहीं कर पाए हो. ओके, यू आर नॉट एबल टू प्रूव दोज चार्जेस एंड देयरफॉर द पर्सन इज रिलीज्ड. So ये दो ही possibilities है. These are the only two outcomes which are possible from a trial. Either there will be acquittal or there will be conviction. So ये difference आपको समझ में आना चाहिए CPC and CRPC में. CPC में जब matter end होता है तो we say that yes, the court gave a judgment and the matter came to an end. या judgment के पहले काफी बार क्या होता है, decrees या orders pass होते हैं. So we do not use these terms under CRPC. CRPC में we either use the word the person was convicted, the person is acquitted. So you have to very carefully use the words after understanding कि ये question CPC का है या CRPC का है. Okay. Next क्या दिया है, inquiry, which is the second stage, is based on investigation, and trial it starts only after inquiry. So आपको याद आया एग्जाम में, और आपने अगर सीक्वेंस ऐसा लिखा, फर्स्ट नंबर पे ट्रायल, सेकंड इंक्वायरी और फिर थर्ड इन्वेस्टिगेशन, तो नहीं चलेगा. ये जो सीक्वेंस है IIT, तो ये सीक्वेंस वैसे ही रहना चाहिए. फर्स्ट में इन्वेस्टिगेशन आएगा, सेकंड में इंक्वायरी एंड थर्ड में ट्रायल. सो यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस एज पर योर रिमेम्बरेंस. नो, इट हैज टू बी इन द सेम सीक्वेंस. IIT. इंक्वायरी इज वाइडर देन द ट्रायल. ट्रायल तो लास्ट स्टेज पे आप आ गए हो, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन से स्टेज में लगने वाला है, तो दैट इज द इंक्वायरी स्टेज, जहां पे कोर्ट इज गोइंग इन डिटेल कलेक्टिंग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव कमिटेड द ऑफेंस. ओके, इज दिस क्लियर? 3 stages. Yes, ma'am. Okay, and as I said, the video is there, so you will watch that also if you haven't understood right now. Okay, बहुत simple है, nothing difficult. CRPC जितना लंबा है एक्चुअल में, उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में है. So जो भी पार्ट है आपके सिलेबस में, that is already very easy, not at all difficult. Coming to the next part, powers of criminal courts. So section 28 and 29 deal with this particular part. अब क्या दिया है यहाँ पे, the courts can impose fine or imprisonment. So कोई भी criminal offense में आप देखो, कोई भी criminal offense में punishment या penalty क्या होती है, fine होती है और imprisonment होती है. Okay, so these are also the words which are very unique under CRPC. ये words आपको सिर्फ criminal offense के लिए ही दिखेंगे. Criminal offenses के लिए जो penalty होती है उसको इधर फाइन या imprisonment. Okay. Civil offenses में you will find words like, you will not find the word fine, imprisonment, but you will say damages were awarded, compensation was given, right? Suit for quantum merit, specific injunction, ये words आ जाते हैं under civil offenses. सिविल में कहीं पे भी imprisonment, पूरे के पूरे सिविल प्रोसीजर कोड में हमने कहीं पे भी ये वर्ड imprisonment यूज नहीं किया है. Okay, so what will be the type of punishment also depends upon the type of offense. If it is a civil offense, the remedies demanded would be different. If it is a criminal offense, the remedies demanded will be different. Okay, तो यहाँ पे स्टेटस के कॉलम में जो नेम्स ऑफ कोर्ट्स है, दिस इज द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स अंडर क्रिमिनल लॉ. हायरार्की ऑफ कोर्ट्स अंडर द क्रिमिनल लॉ. सो यू सी सबसे ऊपर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. कैन यू टेल मी व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट कम इन एग्जिस्टेंस? हु कैन टेल मी द एग्जैक्ट डेट? Exact date when the Supreme Court of India came into existence. Yes, you will be able to. Come on, guess. You may be wrong, it's okay, but guess. Ma'am, 26 Jan 1950. Absolutely right. 26th of Jan, that is the reason we celebrate our Republic Day, right? 26th of Jan 1950, we adopted the Indian Constitution, and Constitution में ही दिया है
हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ सेपरेट हाई कोर्ट्स एक्ट. ओके, but the origin is in the constitution and it was the same date when the Supreme Court of India came into existence. So Supreme Court, High Court में criminal matters जा सकते हैं. They have jurisdiction to try criminal offenses. What type of punishments they can give? Either fine or imprisonment. What is the limit? When I say fine, they can impose any amount of fine. क्योंकि वो क्या मतलब अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो उनको ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ 2 लाख तक की फाइन दे सकते हो या 1 लाख तक की दे सकते हो. नथिंग लाइक दैट. दे कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ एनी अमाउंट, एनी अमाउंट. When it comes to imprisonment also, they can give sentence of any period, including death sentence. Including death sentence. Right? Hanging to that. Kasab. Yes, you all know Kasab. Yes, ma'am. 26/11 Mumbai terror attack. The only terrorist who was caught alive. Right? So later on, what happened to him? The Bombay High Court gave a decision of death sentence. He was hanged to death. So ये करने की power सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को है. ऐसे कोई भी लोअर कोर्ट्स नहीं कर सकते. They don't have that much authority or power. Okay. Coming to the next one. Sessions judge या additional session judge, we are almost equivalent है. High court के equivalent होते हैं sessions या additional session judges. So what is their power? They can also impose fine. Restriction नहीं है ऐसा कुछ. Any amount of fine they can. Sentence, any sentence authorized by law. Only thing कि वो death sentence नहीं दे सकते. अगर देना है, उनके पास कोई मैटर है जिसके लिए डेथ सेंटेंस देने की जरूरत है, तो वो पास करेंगे, बट देन इट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट. सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट. आफ्टर एडिशनल, कमिंग डाउन टू असिस्टेंट. एडिशनल के नीचे होता है असिस्टेंट. एडिशनल इज इक्विवेलेंट, असिस्टेंट उसके नीचे आता है. So assistant judge के पास क्या पावर है? Even he can impose any amount of fine. But when it comes to passing sentence, that is imprisonment sentence, he can pass a sentence up to 10 years. 10 साल का limit है, not more than that. Up to 10 years. उतना ही उसको jurisdiction. फिर assistant session judge के नीचे आता है chief judicial magistrate, or also called as chief metropolitan magistrate. He can impose any amount of fine. Again, fine का कुछ भी limit नहीं, any amount of fine. But when it comes to passing of an imprisonment sentence, it is up to 7 years. So जैसे हम लोग नीचे के कोर्ट्स में जा रहे हैं, उनकी अथॉरिटी कम होती जा रही है, उनकी पावर कम होती जा रही है. मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसको JMFC भी कहते हैं, JMFC, they can impose a fine prescribed under law up to 10,000 rupees. And अब यहाँ से 7 से डायरेक्ट रिड्यूस हो जाता है 3 years. Sentence is reduced to 3 years. And the lowest one, that is the magistrate of second class. So इसको कहते हैं JMSP. Okay, J stands for judicial magistrate second class. This one was judicial magistrate first class. इसकी पावर और भी कम हो जाती है. फाइन अप टू 5,000, सेंटेंस अप टू 1 year. Okay, sentence up to 1 year. So this is the structure of criminal courts and the powers of criminal courts. Yes, what is your doubt, Dhruv? Ma'am, metropolitan magistrate is referring to the city, metropolitan city. Yes, does it? metropolitan city में अगर वो located है, तो we can But call it ma'am, as फिर वो 4 ही हो जाता है ना?
फिलहाल तो मतलब इंडिया में we only have Yes. 4 metropolitan cities, right? Yes. Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. So it's Correct, only correct. limited to these 4. Yes, तो उस एरियाज में हम उनको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. In all other places, in all other districts and cities, we would just call them as magistrate of first class. So ma'am, Pune का second class magistrate होगा, right? Yes. We have JMFC also, we have JMSC also. Only thing, अगर वो metropolitan city में located है, तो we will not only call it as JMFC, we will call it as judicial magistrate, metropolitan magistrate. Okay. So FC, SC इसमें कुछ change नहीं है. Only thing that metropolitan magistrate से हमें समझ में आएगा कि वो उस metropolitan city में located है, बाकी कुछ नहीं. Okay, Okay, location. ma'am. Every district, every city is going to have courts. उसमें कुछ doubt नहीं. ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 cities में ही रहेंगे. Every other city is having criminal courts. They have JMFCs, they have JMSCs located. Okay. So only the word would be metropolitan if it is in that particular city. Okay, ma'am. नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन. दैट इज अगर क्रिमिनल कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन चार्ज किया, आपको फाइन चार्ज किया, ओके, द कोर्ट हैज इम्पोज्ड फाइन ऑन यू, यू हैव टू पे अ फाइन, एग्जांपल ऑफ ₹15,000, 15,000 रुपए की फाइन आपको लगा दी है, आपको ये फाइन पे करनी है. ठीक है, आपको फाइन पे करनी है, बट एक्चुअल में व्हाट हैपेंस, यू आर अनेबल टू पे, यू आर अनेबल टू पे. फिर क्या करेंगे? तो आपको बोला तो था कि इतनी फाइन पे करो, आपने क्या किया, नहीं पे किया. फिर आप थर्ड स्टेप क्या होगा, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप बोलते हो कि पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से फाइन पे करूं. तो फिर कोर्ट कहती है ठीक है, पैसे नहीं है, फाइन नहीं पे कर सकते हो, तो फिर ठीक है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रिजनमेंट. द कोर्ट कैन पास इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर इन प्लेस ऑफ फाइन. क्योंकि अगर आप कहते हो पैसे ही नहीं है, मैं फाइन नहीं पे कर सकता, देन यू बेटर गेट इनसाइड, राइट, यू आर इम्प्रिजन्ड. And that time the maximum period of imprisonment can be 1/4 of the total limit of imprisonment that can be imposed by the court. आपको मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट हो सकती थी उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए? आपको 4 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने आपको तब इम्प्रिजनमेंट नहीं, आपको फाइन दी थी, लेकिन आप फाइन भी नहीं पे कर सकते हो. सो नाउ 1/4, ओके, दैट इज मैक्सिमम 1 ईयर की आपको क्या हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है. अब इस पॉइंट को समझने के लिए ये अगला वाला जो केस है इसको देखना. मिस्टर कालू प्रसाद यादव इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मेक्स इनटू 4 इयर्स एंड उसके लिए फाइन है 2,500. अब मिस्टर कालू ने क्या किया, ही डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ फाइन. वो फाइन ऑर्डर आई लेकिन वो पे नहीं कर पाए. फिर कोर्ट ने कहा ठीक है, आप फाइन नहीं पे कर सकते हो, तो हम आपको इम्प्रिजनमेंट अनाउंस करेंगे. कितनी? इम्पोज एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 इयर्स और 2 साल. ठीक है, 4 साल तो ऑलरेडी थी, 4 साल प्लस 2 साल उन्होंने बोला इम्प्रिजनमेंट. मिस्टर कालू प्रसाद यादव ऑब्जेक्ट्स द ऑर्डर. इज हिज ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल? नाउ हियर यू हैव टू अप्लाई दिस रूल एंड से द कोर्ट कैन पास एन इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इन ल्यू ऑफ फाइन, दैट इज इन एडिशन टू, है ना. सो फाइन तो है, तो फाइन को कट कर गया, फाइन नहीं पे कर रहे ना, तो उसके जगह पे इंस्टेड ऑफ फाइन, सो इन ल्यू ऑफ का मीनिंग लिख लो, इन ल्यू ऑफ मींस इंस्टेड ऑफ. सो इंस्टेड ऑफ फाइन कोर्ट कैन गिव एन इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर व्हिच इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट.